आपकी पहले तो आप धीरे से बोलती थी, हंस के बोलती थी तो अच्छा बोलती थी, अभी थोड़ा जोर जोर से बोलती है। अब आप समझिए कि व्हाइट पेपर इसी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान ने किया। छगन भुजबल जी के ऊपर महाराष्ट्र सदन का केस इसी पृथ्वीराज चौहान ने किया, उन्हीं के एसीबी ने किया। 70,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम का भी केस इसी कांग्रेस ने किया। हमने क्या किया आपके साथ? हमसे क्यों, किस बात की लड़ाई है? हमने आपके साथ क्या किया? आपको तो इस कांग्रेस को देखना चाहिए था। इसके बाद एक पार्टी है सर, फारूक अब्दुल्ला साहब, बड़े सीनियर हैं यहां। 1953 में, याद करिएगा सर, 1953 में शेख अब्दुल्ला साहब को जेल में इसी कांग्रेस पार्टी ने बंद किया। 1975 तक 22 साल वो आदमी जेल में रहा इस कांग्रेस पार्टी के कारण, और उसके बाद समझौता किया, शेख इंदिरा समझौता 1975 में। इनका विरोध उसके साथ होना चाहिए कि हमारे साथ होना चाहिए? यहां ओवैसी साहब बैठे हैं, उस दिन पूछ रहे थे कि मैं इधर रहूं कि उधर रहूं। आप तो मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इसी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लाया, उसने कहा कि पूरे देश में मुसलमानों की हालत खराब है। आपको विरोध इस कांग्रेस से होना चाहिए, हमारे साथ प्यार होना चाहिए कि आप उसके साथ अविश्वास प्रस्ताव पे खड़े हो। और बचे जेडीयू सर, जेडीयू। और मैं बड़ी गंभीरता के साथ एक बात आपको कहना चाहता हूं कि 2005 में जब जेडीयू की सरकार नहीं बनी और रामविलास पासवान जी की आवश्यकता पड़ गई, तो वो मीटिंग दो जगह पर हुई सर। एक पत्रकार के घर पर हुई, जिसका नाम मैं नहीं बोलना चाहता, और दूसरी मीटिंग रामविलास पासवान जी, नीतीश जी की मेरे घर पर हुई सर। और उस वक्त का मैं एक चीज और खुलासा कर देना चाहता हूं कि जेडीयू को यदि सबसे ज्यादा किसी ने फंड करवाया होगा, तो यदि 2, 4, 5 आदमी होंगे तो उसमें एक नाम निशिकांत दुबे का भी है। आप मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरा है, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं, बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। आप उसकी बात कर रहे हैं, आप पूछ लीजिएगा अपने मुख्यमंत्री से। लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव आया सर, लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहां सोनिया जी बैठी हुई हैं, सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की, उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना, जिसका नेम ले रहा है वो बोले, ये लोग क्यों बोल रहे हैं? अध्यक्ष जी, जिसका नाम लिया जा रहा है वो सदन में मौजूद है, वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है। दूसरे क्यों कर रहे हैं ऑब्जेक्शन? दूसरे क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? वो खुद सदन में मौजूद है, उनको कोई ऐतराज नहीं है। दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं? जब ऑलरेडी सदन में लोकसभा की माननीय सांसद मौजूद है और वो ऐतराज नहीं कर रही है, तो दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं? अब आप समझिए सर, मैंने दोनों बातें कही कि बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मैं अपने बात पर कायम हूं सर। आप ये समझे सर, ये केस है सर, इनकम टैक्स का केस चल रहा है। नेशनल हेराल्ड का इनकम टैक्स का एक केस चल रहा है ट्रिब्यूनल में। मैं जो भी पेपर कहेगी कांग्रेस, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है इसको रखने को तैयार हूं। और यदि इसमें एक भी बात गलत होगी तो मुझे आप सदस्यता से उसी दिन निकाल दीजिएगा सर। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सुनना चाहिए सर। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि ये फाउंडेशन के जितने इनके केस है, नेशनल हेराल्ड के जितने केस हैं, उसकी असेसमेंट करें। हाई कोर्ट का आदेश सर, हाई कोर्ट का आदेश आ गया, हाई कोर्ट का आदेश आ गया कि इसको जो है सेंट्रलाइज करना है। ये हाई कोर्ट का आदेश है सर। अभी ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब आप समझिए कि इनकम टैक्स से बचने के लिए 1 लाख रुपया देके कोई 5,000 करोड़ की कंपनी ले सकता है। ये मैडम सोनिया जी और राहुल जी बता सकते हैं सर, कोई दूसरा नहीं बता सकता। और ये कह रहे हैं
ये कह रहे हैं कि केवल हमारे ऊपर ये चीजें होती है। यहां जीएम सिद्धेश्वर बैठे हुए सर, हमारे पार्टी के सांसद हैं जीएम सिद्धेश्वर, अब भी 80 करोड़ रुपया उन्होंने इनकम टैक्स में भरा है सर। यदि मोदी जी आपको चोर कहने की बात करते हैं तो अपने पार्टी के भी लोग जो दोषी हैं उनको भी 80 करोड़ रुपया दिया। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं सर, जीएम सिद्धेश्वर को 80 करोड़ देना पड़ा, बीजेपी के 4 बार के सांसद हैं, और आप इनकम टैक्स के लिए बचाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हो। ईडी की रेड होती है सर, और मैं आपको बताऊं कि एक भाग गया है, भंडारी है, मैं उसका पूरा नाम नहीं लूंगा क्योंकि भंडारी कोई भी हो सकता है सर, किसी भी दिन वो यूके से लौट कर आ जाएगा। मैंने इसी हाउस में कहा था कि किसी आदमी का जो है, दामाद जी का जो है मकान है लंदन में, ये कोर्ट का ऑर्डर है सर। एक आदमी जो भागा उसका नाम है सीसी थम्पी, कोर्ट के आदेश के बाद उसका बेल हुआ, इस कोर्ट का ऑर्डर है सर। उस कोर्ट के ऑर्डर में सीसी थम्पी ने ये एक्सेप्ट किया कि उसने जो दामाद जी हैं, दामाद जी के नाम पर, कौन दामाद, कोई भी दामाद हो सकता है, इनको दामाद जी से क्या प्रॉब्लम है सर, मेरा भी दामाद हो सकता है। 12 ब्रांसन स्क्वायर थम्पी ने, जिसको थम्पी ने, कोर्ट ने आदेश दिया कि जब जरूरत होगी तुम आ जाना, आप समझिए कि वो भाग गया। उसने कहा कि 12 ब्रांसन स्क्वायर जो है हमारा है। उसी तरह से संजय भंडारी का जो आने वाला है सर, यूके कोर्ट ने जो आदेश किया है उसमें यह बात कहा है कि दामाद जी का वो मकान है। आप क्यों भाग रहे हो? तो जो मैंने आपको कहा कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है सर, ये अविश्वास प्रस्ताव का जो मूल मंत्र है कि बेटे को जो है सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। कल जो है सर, कल मेरी बात पर जो है बड़ा हंगामा हुआ, न्यूज क्लिक के ऊपर बड़ा हंगामा हुआ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये बताऊं, यदि न्यूज क्लिक का नाम यदि डिलीट ये रेस्टोर हो गया, कांग्रेस को क्या समस्या है सर? न्यूज क्लिक आपका कौन लगता है? पुरकास्ट का नाम यदि रेस्टोर हो गया, पुरकास्ट आपका क्या लगता है? रोहिणी सिंह, अभिसार शर्मा या कोई भी मान लीजिए ठाकुर रंजन प्रागता, यदि उसका डिलीट हो गया नाम या एक्सपंज से फिर बाहर आ गया, आपको क्या परेशानी है? आपका कोई मतलब नहीं है। और मैं ऑन रिकॉर्ड एक और रिविलेशन करना चाहता हूं सर कि सीपीएम के जो जनरल सेक्रेटरी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी थे प्रकाश कारत साहब, उनका पूरा का पूरा मेल मैं ऑन रिकॉर्ड आपको लाना चाहता हूं कि जो वो नेवेली राय सिंघम था उसके साथ उनके हजारों मेल हैं, और जब आप कहेंगे मैं ऑन रिकॉर्ड उसको पेश कर दूंगा सर कि सीपीएम किस तरह से देशद्रोही पार्टी के साथ है। हम तो आइडियोलॉजी में मानने वाले हैं। यदि हमने सीपीएम के साथ लड़ाई की आइडियोलॉजिकल, तो आज तक हमने सीपीएम के साथ समझौता नहीं किया, आज तक हमने समझौता नहीं किया। यदि हमने कहा कि कोई मुस्लिम लीग जिसने कि भारत विभाजन किया, आज तक वोट बैंक की राजनीति के बाद हमने मुस्लिम लीग के साथ नहीं लिया, लेकिन आपको जिस कांग्रेस पार्टी ने रोज रोज जलील किया, रोज रोज जलील किया, उसके साथ आप किस आधार पर जो है शासन में हो? मैं आपको बताऊं, मैं आपको अध्यक्ष जी, समस्या क्या है? समस्या क्या है कि हमने जो है एक क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है गरीब के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं। एक विकास की पट्टी देखकर आपने अभी पूरे पार्लियामेंट को देखा कि किस तरह से परेशान हुआ। कारण क्या है सर? मैं जिस इलाके से आता हूं, मैं आपको बताता हूं कि रीजन क्या है और इतना बड़ा बखेड़ा क्यों। मैं जिस इलाके से आता हूं वहां संथालपुरना इलाका है सर। यदि रात हो जाए, तो यदि कोई बीमार हो जाए तो उसको गंगा नदी टपने के लिए कोई पुल नहीं था सर। आजादी के 75 साल बाद आज वो पुल बन रहा है साहबगंज का सर। झारखंड इस देश में सबसे ज्यादा माइंस और मिनरल्स देता है सर। 40% से ज्यादा माइंस और मिनरल्स इस देश का झारखंड में। उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा विस्थापन, सबसे ज्यादा पलायन उस झारखंड में।
आज आप समझिए उसका कारण यह था कि हमारे पास कोई पोर्ट नहीं था सर। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण मल्टी मॉडल हब पोर्ट जो है साहबगंज में गंगा नदी में बना है। मैं जहां से सांसद हूं सर, 75 साल में वहां के लोगों ने रेल नहीं देखा। आज जो है मैं गोड्डा की बात कर रहा हूं, गोड्डा जहां से मैं सांसद हूं, गोड्डा जो मेरा नाम है, मैं आपको बताऊं सर 75 साल में गोड्डा के लोगों ने रेल नहीं देखा। आजादी के 75 साल बाद आज वहां रेल है, उस रेल को देखने के लिए 5 लाख की भीड़ आई थी। आज ये सिचुएशन है सर। ये लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं सर, पोजीशन की बात करते हैं कि हमने बहुत विकास कर दिया। मैं एक ऐसा बदनसीब आदमी हूं सर कि जिसकी अपनी छोटी बहन इलाज के बिना मर गई। 93 में मेरे यहां कोई डॉक्टर नहीं था जो पेट दर्द का भी इलाज कर पाए। 93 में मैंने अपनी छोटी बहन को खोया है सर। आज उसके भाई होने के नाते मुझे गर्व है कि मेरे लोकसभा में एम्स जैसा इंस्टीट्यूट प्रधानमंत्री ने। देवघर है सर, 12 ज्योतिर्लिंग का देवघर है, वहां लोग पूजा नहीं कर पाते थे। आज बेंगलोर से, आज बंबई से, आज अमेरिका से, लंदन से सभी लोग वहां एयरपोर्ट पर चढ़कर आते हैं। यह विकास है। आज मेरे लोकसभा में 2 मेडिकल कॉलेज, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 16 ITI, 2 एग्रीकल्चर कॉलेज, 1 डेयरी कॉलेज, 4 केंद्रीय विद्यालय, ये सारी चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है सर। इनका विरोध यह है कि गरीब के घर में जो चूल्हा जल रहा है, जो घर घर में पानी जा रहा है, जो नल जल की पहल चल रही है, जो गंगा से पानी देवघर आने की बात चल रही है, उसका यह विरोध है सर। इनका विरोध यह है कि बाइडेन ऑटोग्राफ क्यों लेता है। इनका विरोध यह है कि पापुआ न्यू गिनी का जो है प्रधानमंत्री उनका पांव क्यों छूता है। इनका विरोध यह है कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रधानमंत्री है वो उनको बॉस क्यों कहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे पिछड़े इलाके हों, चाहे देश हो, चाहे दुनिया हो, जितना काम किया है उसके कारण इनको लगता है कि 2024 में नहीं आने वाले हैं। मैं अध्यक्ष जी अपनी बात महाभारत से खत्म करना चाहता हूं। महाभारत का एक बड़ा कहानी है सर कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और पूरे, चाहे कौरव पक्ष के लोग हों चाहे पांडव पक्ष के लोग हों, वो सभी जो है चीरहरण को देख रहे थे। अध्यक्ष महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री जी, ये लोग नहीं समझेंगे सर, ये लोग इसीलिए नहीं समझेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जब परिवारवाद की बात करते हैं ना तो इनको लगता है कि परिवार की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी परिवार की बात नहीं करते हैं। वकील का बेटा वकील हो जाए क्या दिक्कत है, IAS का बेटा IAS होता है सर। यहाँ DG हैं RPF के, वो IPS भी हैं, उनके दोनों बेटे IAS बने सर, जो अपनी योग्यता क्षमता के साथ आते हैं। परिवार को वो क्या कहते हैं, आज मेरे यहाँ का नेतृत्व क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब परिवार से हैं। माननीय नड्डा जी ये हैं जिनके परिवार में कोई पॉलिटिक्स भी नहीं था। माननीय राजनाथ जी बैठे हुए हैं, एक कॉलेज में जो है पढ़ाते थे सर, और आज समझिए कि इनको भगवान ने जो है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया। डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं सर, जिनके आगे पीछे जो है कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। हमारे जैसे लोग हैं। क्या है कि यहाँ जितना परिवार है ना वो इनके पीछे हैं जो कि परिवार का आदमी नहीं है। और वहां समस्या ये है कि वो सभी परिवारवाद जो है वो उनका जो नेता है, इसीलिए उनका परिवार और परिवारवाद में फर्क है, उनको नहीं समझ में आएगा सर। तो मैं आपको ये कह रहा हूं सर कि आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है सर, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ है। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है उस आदमी के खिलाफ है जिसने कि लोगों को मकान बना के दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के पीछे है जिसने कि लोगों को पीने का पानी दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने शौचालय दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के खिलाफ है जिसने सबों के घर में उजाला लाने की कोशिश की, गरीब के खिलाफ है। और जितने बहस होंगे सर वो माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का चीरहरण करेंगे, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं इतिहास से कि चाहे राम मंदिर बना दिया हो, 370 जो हमारी थी धारा, वो सारा तो हमने बना ही दिया। मैं केवल इतना कहता हूं सर कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, जयद्रथ, चाहे वो युधिष्ठिर हो चाहे वो अर्जुन हो, सभी मौन धारण किए हुए थे। आज यदि माननीय प्रधानमंत्री जी का, गांव गरीब किसान के हितैषी का आप चीरहरण करेंगे
तो जिस तरह से न धृतराष्ट्र बचा, न दुर्योधन बचा, न भीष्म पितामह बचे, न अर्जुन बचा, न युधिष्ठिर बचा, आप में से कोई नहीं बचिएगा। 2024 में आप लोग कोई वापस नहीं आइएगा। हम 400 सीट के साथ वापस आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। सर रूल टीआर बालूजी, सॉरी टीआर बालूजी। अरे बालूजी को बोलने दो, टीआर बालूजी मैंने अलाउ नहीं किया। बालूजी आपने अलाउ किया। सर निशिकांत दुबे ने मेरा नाम लिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला कैसे लुटा। भारत माता इनका पेटेंट नहीं है। भारत माता 140 करोड़ लोगों की भारत माता है। ये गलत नैरेटिव चलाते हैं। ये नारी विरोधी है। इन्होंने नारी का अपमान किया। निशिकांत दुबे ने अभी नारी का अपमान किया। ये वो व्यक्ति है जो बालूजी, ये वो व्यक्ति है जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में आदिवासी लोगों से पैर धुलवा करके पानी पिलाते हैं। ये वो व्यक्ति है जिसने आदिवासियों से अपने पैर धुलवाए और उसको पानी पिलवाया। सर ये वो व्यक्ति है जो आपका रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। ये वो व्यक्ति है जो आदिवासियों से पैर धुलवा करके पानी पिलाता है। सर मणिपुर पर चर्चा नहीं की और ये जो है नफरत, टीआर बालूजी यहाँ पर भी नफरत फैलाने का काम किया इस व्यक्ति ने। Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir. I support the no confidence motion on behalf of DMK. First of all, I start with Mr. Nishikant Dubey, who has ended his speech with reciting Mahabharata. I am also reminded of a particular episode wherein Krishna has advises Arjun to throw their aims his bow towards his grandfather, kith and kin, friends and everybody. That was a story in the epics. But what is the end result of the Mahabharata? Finally, they lost it, and King Arjun, Dharma and other people won the case. He has recited about Draupadi and other people. So what has happened? Finally, that is the end result that is most important as far as that epic is concerned. I am also not willing to oppose my old friends. They are all very close friends, especially my friend, the leader of the house, Mr. Narendra Modi, and other friends also. They are the first friend everywhere. They are my friends prevailing over the ruling party. I am rather hesitating to oppose them because of the only reason it was led by the late lamented leader Vajpayee ji. That was the only reason. And at the same time, now I am opposing. Now I am supporting the no confidence motion means because we want to kill the evils. Krishna advised Arjun, you are not going to kill your kith and kin and friends. You are going to kill the evils only. The same thing I am doing, sir. There is no other way for me, sir. Sir, moving the motion, no confidence motion against the brutally majority government, it is not fair on our part. It is not all fair. And moreover, it is at the fag end of the parliament, this parliament. It is not fair on the part of the opposition to bring the no confidence motion, sir. But there is no other way, sir, because Prime Minister is not coming. Prime Minister has been elected member of Parliament and nation's Prime Minister to attend the government Parliament only. He has not come so far. That is why there is no other way to bring
the Prime Minister to this House, sir. That is why a no confidence motion has been filed by the India opposition. Sir, to start with Tamil Nadu, he is making the stepmotherly attitude towards Tamil Nadu, sir. What he has done, just before the 2019 election, James was a foundation laid by that same Prime Minister. Even after 5 years, they have not done even single brick over the first brick. They have not done it, sir. Sir, he has promised 2 crore job every year. By this time, 18 crore job would have been created. Nothing, he has not done. Sir, he has promised 15 lakhs per head. But he has not given even single rupee to the household. Sir, he has promised jobs, lakhs and lakhs of jobs to our young men. Even he has abolished 5 crore jobs in the Manrega. And moreover, over 46 years, the unemployment is still prevailing. He has not done it. He has failed to do that, sir. Sir, wherever he goes around the world, he talks about Tirukural, he talks about Tiruvallur and so on, sir. But he is not making the rightful thing to Tamil Nadu, sir. Shame. Sir, 2,000 crores out of 50 lakhs, 2,000 crores out of 50 lakhs budget, can't he provide to Tamil Nadu for the construction of aims, sir? Just now, the other friend has said, there are a lot of aims have come throughout the nation, but nothing has happened in Tamil Nadu. Shame. Is it fair on the part of the Prime Minister? That is why we wanted to get out of him, sir. Sir, and they say the money has to, for the aims, this aims alone. For the Tamil Nadu aims, the money has to come from Japan. Is it not shameful, sir, on the part of the Prime Minister? Sir, out of 41% of the allegation, we are getting only 20% against our exchequer income, exchequer payment from Tamil Nadu, sir. Some years back, the late lamented leader RahuL Gandhi ji and Jayavarthane had made an agreement. Rajiv Gandhi ji and Jayavarthane made an agreement. In the 13th amendment of Sri Lanka should be taken care. And unless otherwise 13th amendment is made up, there won't be peace in northeast of the north and east of Sri Lanka. That is what both the leaders have agreed and signed in the agreement. That agreement has not yet been placed, not yet been retrieved from the cupboards of the Sri Lankan government. They have not done it. But every now and then, Government of India is helping the Sri Lankan government often and often, sir. They have miserably failed to retrieve back the Kachetiu, which was owned by Ramanathapuram, king of Ramanathapuram, anciently, sir. They have not done it, sir. Women reservation, they are simply keeping quiet, and the women folk of India is cursing him. But for that purpose, he has to go. Sir, what happened to Sethi Samutram? Yes. Sethi Samutram is just, they kept in the cupboard. Only reason is, Madam Sonia Gandhi ji and Dr. Kalaya Karnanidhi came to the function in the forefront. They said in the forefront, that's all. It was laid in the foundation stone was laid by Dr. Manmohan Singh, overwhelmed by the whole of the world. Just on the laying of the foundation stone, the whole world appreciated. 160 years old project, sir. That has not, in the middle of the project, they have stopped it because Sangh Parwar has stopped it by a court order. Sir, who has created the route? The route was created by Vajpayee ji only. Line, alignment, everything was laid by
Vajpayee only. It is his own child. But it has been brought up by Dr. Monsoon Singh and Sonia Gandhi and Dr. Kalangir Karnanidhi. Because they have brought up, only 30 kilometers is pending, sir. Otherwise, it would have been completed by 3 or 4 months. So shameful on the part of this government. This government should go immediately because all the Tamils, in spite of his recital of Tirukural, the Tamil the stanzas, people won't forget him. He will face the sequence in 2024. Yes. Sir, the government has promised MSP. Only 700 people have been killed in Delhi. MSP has not come to the reality so far, sir. 15 lakhs, 2 crores, all are as history. And prices, the petrol and diesel. So what is the international price on crude oil? $88, $88. What is the price of petrol and 100 rupees and 103 rupees? So this is not fair. But what has happened in those period, during UPA period, it was 60, 65, just like the only. At that time, the diesel price, what is that? Crude oil price was only 80 rupees. Now, $80. What is happening now, sir? Sir, 155 lakhs government loan is there. Now, what was the UPS performance? Only 55 lakhs, sir. This is what, that is why we are opposing this government. Forthwith, we have to get out of this government, sir. Governance, sir. Coming back to treatment meted out by minorities. Minorities of Manipur have been killed ruthlessly, sir. Shame. Sir, what has happened? Shame. 143 people have been killed. 10,000 people have, 65,000 people have Displace. They have fled out of the particular state. And two women folk have been striped, gang raped, and paraded nude in the streets of Manipur, sir. Sir, it is worthwhile to say now, under 1,044 incidents took place. Women and children brutally killed. Where? It is not in Manipur, sir. It is in Ahmedabad, sir. The daylight they have been killed. When Honorable, our Prime Minister, the former Chief Minister of Gujarat was ruling the government. Shame. 2,500 people were missing. Majority are belonging to minority community. Shame. The whole civilized world was up in anger and condemned the Gujarat's drama in strong terms. Many fact-finding, impartial investigation revealed that merciless power politics, editorial and prescribed and targeted crimes, and CM of the day was accused of condemning violation. Not condemning the violence. But your own party, Prime Minister Vajpayee, condemned the bloodbath and said, don't cross sacred line of Raj Dharma. So I quote the PT story, sir. PT story on 4/4/2002. Speaking to reporters at the end of the day, visit of Gujarat, he told the Chief Minister of the day, Mr. Modi ji, Chief Minister, to follow Raj Dharma and make no distinction between the people on the basis of caste, creed, and community. And further, he says, majority needs no protection. Majority is capable of safeguarding its interests. They have the number on their own. It is only the minority which needs protection, sir. This is what the same thing is happening here, sir. Nowadays, what has happened to Gujarat? Majority versus minority. The same thing is happening in Manipur. Majority versus minority. It has been inflicted upon the minorities by the majorities. The Chief Minister is helpless. He is looking lukewarm. And the Prime Minister is not coming to the Parliament, and also he has not gone there. Whereas the responsible India
parties have went to the Manipur and they have just understood what has happened, and that is why they are speaking loudly, sir. Late leader Lajpai stood for the Raj Dharma, and we are standing behind a person who is doing the Raj Dharma nowadays, sir. But today we cannot stand behind them, because when women are gang raped, striped and nakedly paraded, 140 people were killed, 300 people were severely damaged, 65,000 people have already ran for shelter to the adjoining forest. And CM Manipur tell openly that 100 such incidents of naked parading had happened. Shame. Shame on the part of the... Shame. Sir, now the whole world is condemned the happenings in Manipur in no uncertainties. European Union Parliament, they say discussion in European Parliament and British Parliament have condemned PM Modi's and his party very strongly. In the EU Parliament, six parliamentary group has appealed the European Parliament. They say in their plea, whereas violence in India's Manipur state has erupted along ethnic and religious lines between the mainly Hindu Meitei community and Christian Kuki community, leading to a cycle of violence with over 100 people killed, over 40,000 displaced, and the destruction of the property and places, and so on, sir. Whereas in the latest round of violence, human rights groups have accused the BJP-led government in Manipur and nationally of implementing divisive ethno-nationalistic policies which opposes in particular religious minorities. Modi visit to VSA has castigated, US visit has castigated 75 Democrats MPs for human rights violations in India. That is in US, sir. So lastly, I want to quote Narendra Datta, sir. Narendra Datta's speech. I quote, sir. Datta addressed the gathering as brothers and sisters. He has mentioned brothers and sisters, not ladies and gentlemen. The brothers and sisters has got more homely than ladies and gentlemen. He says I quote the speech, sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanatism, have long possessed this beautiful earth. They have filled this earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nation to despair. This is what the great man Narendra Datta said to the world. The man who introduced Hinduism to the world said these words, warning the world from disaster. He also quoted, I again quote, I am proud to belong to a religion which has taught me and world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and refugees of all religions and all nations of the earth. That is what he has told, sir. Finally, he says, it is Narendra Modi famed Hindutva which the world witnessing today. This is nothing but Hinduism, where religious tolerance has no place. Your schemes of things has sent agendas like Citizenship Act amendment to drive away minorities and uniform civil code, etc. Sir. Finally I quote, Tirukural 474. அமைந்து ஆங்கு ஒழுகான் அளவறியான் தன்னை வியந்தான் விரைந்து கெடும். He who defies righteous order, oversteps limit, and enjoys self-aggrandizement gets lost fast. This is what I want to tell my close friend Narendra Modi ji. So the whole world has warned him against the peril he is going to meet, and also the Indian
parliamentarians in this house, sir. Moreover, he is very aggressive and atrocious also. During how come he is not attending the parliament, sir? Yes. How come? Yes. What right sir? Public has elected him to come to parliament, yes. And moreover he is holding the position of prime minister. Yes. This is not fair on the part of him, sir. Over near about 1 month, all the members of parliament belonging to the opposition, every day in day out they are just making a plea before them, and this ruling party is trying to support all these rules and regulations of the parliament and also the Constitution of India. Moreover, there is one person in our state. Finally, sir, there is one person in our state. Sir, Assembly is in session. Chief Minister and all the ruling party, the opposition, everybody in present. But before chanting national anthem, this man is going out, sir. What? Shame on the part of the governor who is ruling the state. It is not fair. So ESP brought back to the governor by the governor, and the Home Minister should take note of it. Yes. And governor should be condemned in all respects. Yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Professor Swatantra. Sir, on behalf of the All India Trinamool Congress and its leader Mamata Banerjee, I rise to speak on the no confidence motion. I also speak on behalf of the India Alliance. I express confidence in the Supreme Court, which restored Rahul Gandhi's membership. Also, I express no confidence motion against this government. I have to say that I have nothing personal against Mr. Modi. But as Brutus said in Julius Caesar, not that I love Modi less, but that I love India more. If anybody loves India, they will oppose Modi. Because his government has been a government of failed promises and disastrous policy decisions. Still, sir, I do not want to make it personal. I do not want to raise the question of Modi ji's educational qualification, over which there is a cloud. Nor do I want to speak on Gujarat riots or the BBC documentary on Modi ji on Gujarat riots. Sir, before going to my main point on Manipur, I want to mention that this government is destroying federalism in the country. Yes. Its purpose is to weaken all state governments. West Bengal is a victim because Amit Shah went to Bengal and said, Agle bar 200 par. BJP could not even get 80 seats. So they have stopped all money for Narega, which amounts to 7,300 crores, and for PM Awas Yojana, which amounts to 8,400 crores. Our party has given a call. If the money is not released soon, then on 2nd October, we shall bring lakhs of people to Delhi to demand our share, our dues in respect of Marek. Sir, I do not want to reply to Mr. Nishikant Dubey. He is a man desperate to get into the ministry somehow or other. So he has to flatter the government. And he quoted all wrong history, which I don't want to go into. But I want to remind him that he belongs to an organization which did not participate in the August 42 movement. Yes. He belongs to an organization which was banned after Gandhiji's murder. Yes. I do not want to have any track with such organization and people representing it. Sir, before going further,
I want to mention there are some ministers, sprinkling of ministers here, that ministers must control themselves. Earlier, Anurag Thakur went to a meeting in Delhi and said, Goli maro, dash dash. And now Meenakshi Lekhi, minister from Delhi, is saying that don't speak against us, we shall send ED to your home. I want to say that I come from the land of Tagore, who said, don't fear. Ami bhai korbo na bhai korbo na. Duvela morar age morbo na bhai morbo na. I shall not fear, and I shall not die twice before dying actually. Sir, this government is government of the heartless. They are sending delegations to West Bengal on any plea, but not one delegation has gone to Manipur, where our brothers and sisters are dying. Sir, I'll remind you that of what Mark Antony said in Julius Caesar. You blocks, I'll paraphrase it and say, you blocks, you stones, you worse than senseless things. Oh, you hard hearts, cruel men of BJP. You have no compassion. That's why you have not gone to Manipur as all the opposition parties have gone. Sir, let me say a few words about Manipur. My young friend, Mr. Gaurav Gogoi, has very ably summed up the situation in Manipur. Manipur ethnic clashes between Meiteis and Kukis started on 3rd May 2023 and are still continuing. On 5th August, 5 people, 3 Meiteis and 2 Kukis were killed in Manipur in escalation of hostilities. So far, over 150 people have been killed. At least 100 women were raped, and over 70,000 people have been displaced, and 350 relief camps have been set up. The delegation from India which went met people in relief camps in Imphal and Churachandpur. Nishikant did not mention a single word about Manipur. This government wants to forget. Sir, the actual count may be higher. And now, these incidents in Manipur remind one of the riots in Rwanda between Hutus and Tutsis some years ago. The worst incident in Manipur came to light on 19th July when a video went viral showing 2 Kuki women being stripped, paraded naked on the streets and sexually assaulted by apparently Meitei men. Sir, are we living in a civilized country that this happens to our sisters? This is unimaginable. No action was taken by the police for more than 2 months until the video emerged. This was due to internet shutdown in Manipur, which, as Gaurav mentioned, is still continuing. The Prime Minister opened his mouth after 80 days since the start of violence, saying that his heart is full of pain and anger. But he has not visited Manipur till date. Now the Supreme Court has belatedly set up a 3-judge committee consisting of women judges. This is good because when the government fails, the highest court of the land has to take up the matter. Sir, till today, mobs of Meiteis are attacking Kuki villages who are retaliating with SLRs, AK-47, etc. Much of the arms are coming from abroad across a porous border and is funded by mainly poppy money, opium money. Police armories are looted. The government led by BJP Chief Minister Biren Singh, who is a Meitei, has failed to maintain law and order. I demand that he should be immediately dismissed and President's rule imposed on the state. Sir, one interesting thing, you are a doctor from Ahmedabad, you will realize that what was the Prime Minister doing from May to July this year when
Manipur was burning, he visited 7 countries, in which USA from 20 to 23rd June, Hiroshima, Japan, 20th May, Australia, May 24, France, July 13 to 14, UAE, July 15, Egypt, to see the pyramids, 24 to 25 June, Papua New Guinea, 24 to 25 July 2023. And he was very proud that Joe and Jill Biden gave a private dinner at White House in his honor. हम कहते हैं ना साहब लोग पीठ ठोक दिया तो साहब लोग उसको प्राइवेट डिनर दिया, बहुत खुश हो गया, और हमारे बहन लोग उधर उनको इज्जत छीना जा रहा है. दिस इज आवर प्राइम मिनिस्टर. सर, इज आवर प्राइम मिनिस्टर a roving ambassador or a traveling salesman? Because he even went to Sikar in Rajasthan to campaign in the midst of all this. Now, the Prime Minister has to reply why he was visiting foreign countries when Manipur was burning. Sir, let me come to some other points. The major failure of the government is to check price rise. Price of tomato is at 250 rupees a kg. He has failed to provide jobs. It is destroying social harmony. We have seen the communal riots in Nuh and Gurugram in Haryana. They are still continuing, polarizing the communities, destroying federalism. Sir, in Nuh, allegations are made that only Muslim houses are being demolished by bulldozers. Sir, the government is destroying federalism by sending useless governors to states to disturb state governments, as in West Bengal, Tamil Nadu, Maharashtra, and Delhi. Sir, the government has been weakening institutions, Parliament to Election Commission. Modi never comes to attend Parliament. He has not replied to a single question in Parliament. I have seen many other parliaments. I have never seen a man like him, who as Prime Minister does not reply to a single question. He does not believe in parliamentary democracy, and maybe he... स्वागत राय जी, आप तो बहुत वरिष्ठ मेंबर हो. सर, प्रधानमंत्री जी का आप